Today we will continue de Broglie equation. We have covered the relation lambda equal to h upon mv or lambda equal to h upon square root of 2m into kinetic energy. So this is the relation for de Broglie equation. De Broglie equation देखो ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है हाउ इट इज डिराइव्ड वो हम आज करने वाले हैं कि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डी ब्रोगली इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर फोटोन. किसके लिए डिराइव किया? फोटोन. फोटोन इज पैकेट ऑफ लाइट. तो फोटोन को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करके उसमें बाय अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप उसके लिए डिराइव किया पहले. ठीक है. सो लेट अस टेक एग्जांपल कि अ फोटोन ऑफ स्पीड कितनी होती है स्पीड फोटोन की? c and its wavelength is lambda. So according to Planck's quantum theory, तो पता है आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू और लैम्डा की टर्म में E इक्वल टू h c by lambda because we need lambda here, right? So E equal to h nu और h c over lambda ये प्लैंक्स इक्वेशन है. ठीक है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ. ठीक है. h आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट और c है स्पीड ऑफ लाइट. एंड अकॉर्डिंग टू Einstein mass energy relationship क्या होता है? E इक्वल टू mc स्क्वायर. एनर्जी मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी when light fall on it. Okay, so E equal to mc square. Okay, good evening. अच्छा मानसी इज ऑल्सो देयर, राइट. तो ये दोनों टर्म्स जो है E h c और लैम्डा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इक्वल टू mc स्क्वायर एज पर आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप. सो इक्वेट देम. दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो इक्वेट देम. इफ वी इक्वेट देम h c over lambda is equal to mc square. So 1c cancel. That implies lambda equal to h upon mc. So this is the relation for photon. Wavelength of photon, m is mass of photon, c is speed of photon. Now if v is speed of particle, means it is applied to the some particle. If v is speed of particle, then c is replaced by v, then lambda is wavelength associated with particle, and this relation becomes आ जाएगा यहाँ पे lambda equal to h upon mv. And that is de Broglie equation. दिख रहा है नहीं? तो lambda equal to h upon mv we can derive by using Planck's quantum theory and Einstein mass energy relationship. समझ में आ गया? प्लैंक्स के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा
और मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग E इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये अपने पास वैल्यू आ गई। m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, h यू नो प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं इसको। डन, ओके। अब ये डेरिवेशन हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन का। नेक्स्ट पार्ट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ particle nature and wave nature of electron। अब देखो, इलेक्ट्रॉन वैसे हम क्या मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की सम स्पीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन हैज मोमेंटम। जिसका भी मोमेंटम होता है दैट इज अ पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के लिए जो हम बात करते हैं, दो फिनोमिनन याद रखना, ये अब सिलेबस से हट गए हैं बट वी विल डू इट आफ्टर सम टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दो फिनोमिनन जो हैं दे आर एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पार्टिकल नेचर जो है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज टू फिनोमिनन। ठीक है, वी विल डिस्कस देम इन लेटर स्टेज। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आता है कि गिव टू मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि वेव नेचर। तो वेव नेचर के लिए जो है ना, वो अगर आपने नहीं सुना होगा वैसे तो, है ना, एक्सपेरिमेंट किया था किसने, डेविसन एंड जर्मर इन 1927। ये दो साइंटिस्ट जो हैं दे डिड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट ले लिया, हीटेड जो सोर्स था इलेक्ट्रॉन का उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया तो दे गेट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, और फिर उसको स्ट्राइक करवाया, ठीक है, क्रिस्टल से, ठीक है, निकल क्रिस्टल से। जब ये स्ट्राइक करवाया और उसका जो पैटर्न था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है वो कलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि देयर आर कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक रिंग क्या होता है, जिनका सेंटर एक हो और ऐसे बढ़ती जाए, साइज बढ़ता जाए, मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो बनी। दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया समझ आया? उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने से क्या होता है, उनकी स्पीड और बढ़ जाती है, दे गेट एक्सेलरेटेड एंड देन दे स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल। आगे उन्होंने निकल क्रिस्टल रखा, उस पे जब से स्ट्राइक किया और जो भी डिफ्रैक्शन हुई इलेक्ट्रॉन की, उसको उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट किया। तो दे मेड दिस थिंग,
उनको ये मिला, ये कंसेंट्रिक रिंग्स मिले, ये था डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हेन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कंपेयर्ड विद एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, सो दे लुक सिमिलर. वो कैसे दिख रहे थे? एक जैसे. देखो जो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न था, एक्सरेज आर वेल नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो उन्होंने देखा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न आर अलाइक, they are similar. So in this way उन्होंने एनालाइज किया और बताया कि एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव वेव नेचर. इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर. पहले टंगस्टन फिलामेंट लिया, that is behaving as electron source, then it is passed through electric field, electron beam gets accelerated और फिर उसको निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करवाया, सो इलेक्ट्रॉन गेट्स डिफ्रैक्टेड. ठीक है. और डिफ्रैक्शन के बाद जो पैटर्न आया दे आर द कंसेंट्रिक रिंग्स. और वो जो रिंग्स बनी डिफ्रैक्शन पैटर्न की टाइप में, दे आर सिमिलर टू एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो उससे उसने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो अ वेव नेचर बिकॉज एक्सरे हैज वेल नोन वेव नेचर. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन? तो लिमिटेशन क्या है इसकी? फर्स्ट और फॉरमोस्ट कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और भी कैसे डी ब्रोगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट for microscopic objects. Like electron, proton, neutron, even atom, ion, but it is not significant for semi-micro or macro, semi-macro or macroscopic particles. Means it is not applicable for heavier objects. Okay. Because their wave character is negligible, because their wave character is wave character क्या होता है? Negligible. For example, let us take electron एंड बॉल. एक इलेक्ट्रॉन है और एक है बॉल, और बॉल का जो मास है वो है बॉल ऑफ 100 ग्राम. ठीक है. ठीक है, ये केस है. और दोनों जो हैं दे आर मूविंग विद द स्पीड with speed of 10 raised to power 5 meter per second. Let us take example. Both are moving with the speed 10 to power 5 meter per second. Now let us calculate the wavelength associated with these particles. One is electron and other is
ball of mass 100 gram. 100 gram is how many kg? 0.1 kg. ठीक है. So lambda, you know, it is equal to h upon mv. So for electron, mass of electron, velocity of electron. For ball, lambda mass of ball into velocity of ball. ठीक है. तो h is, you know, 6.626 10 raised to minus 34 joule second divided by 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Use SI unit into 10 per 5 meter per second. And for this, again, sorry, 6.626 10 raised to minus 34 joule second divided by mass of the ball, that is 0.1 kg into 10 raised to 5 meter per second, right? So just calculate. So values comes out to be 7.27 into 10 raised to 9 meter, and for second one value comes out to be 6.626 into 10 raised to minus 38 meter. Wavelength of the electron comes out to be 7.27 into 10 raised to 9 meter, but here it is, sorry, minus 9 meter, and it's 6.626 into 10 raised to minus 38 meter. So this value is in the electromagnetic range of electromagnetic radiations. This value is for electron, value is in the range, but this value is very, very less. Wavelength, value of wavelength is too small to be counted. It is negligibly small, 10 raised to minus 38 meter. Okay, that's why it is significant only for electron. Okay, for heavier objects, even semi-micro objects, 0.1 kg is nothing. Okay, for that even this is not applicable. Okay, that is a limitation. De Broglie equation is only for the moving microscopic particles. It is applicable for moving microscopic particles only. Find the wavelength of a particle of a 100 gram particle, of a 100 gram particle with a velocity of 100 meter per second. Do it. You will do. Meantime, I am writing what is given. See, wavelength of the particle, that means lambda we have to calculate. Sometimes students don't know what is the formula used and which concept is applied on this particular question. So see, when there is a question of wavelength of the particle, always keep in mind this is de Broglie equation. Concept of de Broglie equation. Lambda we have to calculate, mass is given to you, and velocity is given to you. That's it. 100 gram particle and velocity is 100 meter per second. So 100 gram means same question, 0.1 kg. So according to de Broglie equation,
lambda equal to h upon mv. What is h? 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second divided by mass 0.1 kg into 100 meter per second. So when we apply, from here it is 10, so it becomes simply 6.626 into 10 raised power minus 35 meter. So this is the question. What we think wavelength of the particle. Whenever there is a wavelength of the particle, there is always de Broglie equation. Any particle, electron, proton, ball, right? So we apply de Broglie relation. So for that we need m and v, mass and velocity. Okay? And if kinetic energy is given, we have different equation. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. This is the question. Do it. Velocity of the electron is given to you and you have to calculate de Broglie wavelength associated with it. Just do it. First of all, velocity is given, velocity of electron in Bohr's first orbit. It is 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. And we have to calculate wavelength, de Broglie wavelength. So lambda we have to calculate. Nothing else is given, right? So according to de Broglie equation, lambda equal to h upon mv. Now h, everyone knows, it is 6.626 into 10 to power minus 34 joule second. Mass of electron, that you should know, 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. Okay, so from here lambda equal to 6.626 into 10 raised power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised power minus 31 kg into 2.19 into 10 raised power 6 meter per second. So see, when minus 34, it is plus 31 and 6 minus 31 or 6, 25 minus 25 minus 34 plus 25. It is not added up. Okay, minus 34 and plus 25 25, sorry. So 6.626 divided by 9.1
into 2.19 into 10 raised to power minus 34 plus 25 बेटा, not minus. यहाँ पे गलती कर दी बेटा आपने, रालम. It is minus. You have written it minus. Actually, see, minus 31 plus 6, so it become minus 25. When it goes in the numerator, it become plus 25. Okay. So in this way, नीचे लिख सकते हैं क्या? It is 0.332 into 10 raised to power minus 9. Okay, it is 0.332 into 10 raised to power minus 9 meter. Okay, mean 0.332 nanometer or 332 into 10 raised to power minus 12 meter, and this is picometer, so 332 picometer. Okay, लिख सकते हैं ना. So it is 332 picometer. So this is the answer. Question is similar to electron diffraction, neutron diffraction, microscope is also used for determination of structure of molecule. This is just an information, don't worry about this whole thing. Question is, if the wavelength of the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. This is the question, that just like electron diffraction, there is a neutron diffraction microscope which is used to determine the structure of the molecule. If wavelength used here is 800 picometer, so we have to calculate characteristic velocity associated with the neutron. Okay, this is again a particle, wavelength is given, mass of neutron you need, only mass of neutron, that I will write. It should be given, actually if it is not given I will give you the value mass of neutron, that is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg. See, similar to electron diffraction, neutron diffraction is used for the determination of the structure of molecule. I will write the values given, wavelength of mass of electron, then lambda is given, mass m, wavelength is
800 picometer, and velocity we have to calculate. Again we apply de Broglie equation. So according to de Broglie equation, lambda equal to h upon mv. So that implies v is equal to h upon m lambda. H is 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by m. M is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg. Say mass is in picometer, so you have to convert it into meter in SI units, right? So it is 800 into 10 raised to power minus 12 meter. Got it? So by using this all, say it is 6.626 divided by 1.675 into 8 into 10 raised to power minus 34 plus 27 plus 10. Because if this part 800 into 10 raised to minus 12, it is 8 into 10 raised to power minus 10. So ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 raised to power 10, तो ये हो जाएगा. So ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करके आता है 0.494. इज इट राइट? बाकी को पूछ लो. इंटू 10 रेज टू पावर 37 और ये 34, तो 3 हो गया ना मीटर पर सेकेंड. मीन्स इट इज 494 मीटर पर सेकेंड. Okay, next question is dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron, discovery of electron microscope. Often used for highly magnified images of biological molecules and other type of materials. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 10
per 6 meter per second. Calculate de Broglie wavelength associated with this electron. See, this first part of this question, that is dual behavior of matter, that is proposed by de Broglie, led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. This can be used at advantage of de Broglie equation. This is advantage of de Broglie equation. Okay. Limitation, you know, it is applicable for microscopic objects, and this is the advantage, that it led to the discovery of electron microscope, which is used for magnification. Okay, highly magnified images of biological molecules. Okay, this is the information, just like electron microscope and neutron microscope. Okay, if the velocity of the electron, this is the question actually, if velocity of the electron in this microscope is this, so what is the wavelength of particle or de Broglie wavelength associated with the electron? Okay, see here velocity is given 1.6 into 10 raised per 6 meter per second, and this electron, so mass is 9.1 into 10 raised per minus 31 kg. Value of H 6.626 into 10 raised per minus 34 joule second. Okay, so now lambda is equal to H upon mb. H is 6.626 into 10 raised per minus 34. M is 9.1 into 10 raised per minus 31. 1.6 into 10 raised per 6. Right? It is in kg meter per second. Keep in mind, all are in SI units. All should be in SI units. Okay. Then 6.626 divided by 9.1 into 1.6 into 10 raised to power minus 34, and this is again minus 25. So minus 34 plus 25. Minus 34 and plus, because 31 plus 6. Minus 31 plus 6. So it is minus 25. So ऊपर जाके plus 25. So value comes out to be, बोलो, 10 raised per minus 9. Value is 10 raised to power minus 9. And this value, as you calculated, see, below it, it is bigger number than this. So it is 0. You have calculated 455 or 461, whatever. So this is the value. Means value is 0.455 nanometer. Or if we write 455, then it is 10 raised per minus 12 meter. So it is 455 picometer.